So now we'll go to ear. Ear is responsible for sense of hearing. So first of all, we'll study structure of the ear and then about the auditory pathways. So जो हमारे ears होते हैं, कान होते हैं, they are divided into three main parts: the outer ear or external ear, the middle ear, and the inner ear. Okay, the outer ear is this ear canal, middle ear is this part, and inner ear has uh, the cochlea and the auditory nerve. So this is the major division. जो external ear and middle ear are separated by eardrum, and Eustachian tube is a part of middle ear. Now, what is external ear? External ear is made up of two parts: the auricle or the pinna, and the external auditory meatus or the canal that starts after the pinna. What is auricle or pinna? It is the folded, ridged, cartilaginous plate. So folded होता है हमारे ear का जो पिन्ना होता है, ridged होता है, ridges होती है इसमें, and it is made up of cartilage. तो cartilaginous plate covered by connective tissue, and skin, है ना? अब जो skin है उससे fine hair and sebaceous glands स्किन वाले पार्ट में होते हैं, and in posterior surface sweat glands are also there. In humans, the outer ear or the pinna cannot be moved, but many animals can move their pinna, especially to direct to assess from which direction the sound is coming. Now, depression of auricle, which forms orifice of external auditory meatus, is the concha. This is known as concha. I think there is a spelling mistake over here and one more off होना चाहिए. Then we go to external auditory meatus. What is external auditory meatus? It starts from concha and ends inside at the tympanic membrane as a slightly curved canal. It is not straight. अगर straight होता तो हम यहाँ से दिखता तो हमें middle ear देखना चाहिए. Sorry, tympanic membrane should be visible. But if you have ever gone to show your ear to a ENT specialist, you might have seen that they pull the pinna backwards and upwards. That is to straighten the canal so that we can visualize the tympanic membrane. जब भी डॉक्टर कान अंदर से देखते हैं तो उसको ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ खींचते हैं, है ना? सो ये क्योंकि ये कैनाल कर्व्ड है, आप अगर बाहर से देखोगे तो आपको ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी. लेंथ कितनी होती है इसकी? 55 mm. देन इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द आउटर कार्टिलेजिनस, एंड ये कार्टिलेजिनस पार्ट हो गया, एंड ये इनर बोनी पार्ट हो गया. सो जो कार्टिलेजिनस पार्ट है, इट हैज स्टिफ हेयर, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड सिरोमिनस ग्लैंड्स. सिरोमिनस ग्लैंड्स से क्या होता है? ईयर वैक्स बनता है. व्हाट इज ईयर वैक्स कंपोज्ड ऑफ? It is desquamated epithelial cells and secretions of both types of glands, sebaceous as well as ceruminous. Then inner bony part होता है. इस पे skin is very closely adhered to the periosteum. तो ये बोन हुई, बोन के जस्ट अडेड पेरियोस्टियम हुई और उसके जस्ट टच हुई भी आपकी स्किन हो गई. दैट्स व्हाई इफ देयर इज एनी बॉयल इन दिस स्पेस, है ना, जब भी कान के अंदर फुंसी होती है या बॉयल होता है, इट इज वेरी पेनफुल क्योंकि देयर इज नो स्पेस टू फॉर इट टू एक्सपैंड, क्योंकि स्किन एकदम क्लोजली अटैच्ड है. तो जो भी पस होगा वहां पे
उसको जगह नहीं मिलेगी एक्सपैंड करने की, तो इट विल कॉज वेरी हाई प्रेशर एंड हेंस पेन। अब ये जो स्किन है क्लोजली अडेयर्ड है पेरियोस्टियम से एंड इज कंटिन्यूअस विथ क्यूटिकुलर लेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसमें ओनली सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, सिरुमिनस ग्लैंड्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कम्स आर मिडल ईयर। मिडल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। तो जो मिडल ईयर या टिम्पैनिक कैविटी है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus by tympanic membrane. It lies inside the temporal bone and it consists of auditory ossicles, auditory muscles and Eustachian tube. So ossicles हो गई छोटी छोटी bones, muscles हो गई auditory muscles and Eustachian tube. Now what is eardrum? Eardrum is also known as tympanic membrane, is a thin layer of tissue that separates the outer ear from middle ear, and whenever there will be sound waves coming from external auditory meatus, this will vibrate, and these vibrations through the ossicles go to the inner ear, and then it is converted, these auditory signals are converted to neural signals. So eardrums vibrate when sound waves hit it, and these vibrations move the bones in the ear. Now, what are auditory ossicles? Three miniature bones, very tiny bones, arranged in form of chain, है ना, एक के आगे एक लगी हुई होती है, extended across middle ear from tympanic membrane। यहाँ tympanic membrane हुई, इसके just पहले ये मेलियस स्टार्ट हो गई, next is incus and then stapes. Where does stapes end? This is the oval window. यहाँ पे ये तो tympanic membrane से लेके oval window तक auditory ossicles will be there. Names I've already told, Malleus, incus and stapes. Now we'll go to them individually. What is Malleus? This is Malleus का meaning क्या होता है? Hammer. So it is a hammer shaped bone. Handle is known as manubrium and it is attached to the, ये manubrium हो गया handle जैसा, this is attached to the tympanic membrane, और इधर इसका head हो गया जो this will be attached to the incus bone, बीच में neck होती है ना, तो manubrium, neck and head will be attached to next bone, that is incus. What is incus? Incus means anvil. It looks like a premolar tooth. It has a body and one long process and one short process, है ना? तो ये short cross हो गया, ये long cross हो गया, and this is the body. Anterior surface तो malleus से attached होता ही है. Knob like tip, यहाँ पे this is a knob like tip of the long process. Long process is also known as lenticular process. So इसका ये जो knob like tip है, this will articulate with the bone stapes. Stapes is the smallest bone in the body. ठीक है? What parts does it have? A head, a neck, an anterior crus, a posterior crus, and a foot plate. तो ये head हो गया इसका, यहाँ neck हो गया, एक anterior crus होगा, एक posterior crus होगा, and there will be the foot plate, which forms the base of stapes. Head articulates with incus. ये head है इस bone का, this will articulate with incus, and foot plate fits into the oval window. There are two auditory muscles, tensor tympani and stapedius. Tensor tympani muscle arises from cartilaginous portion of the Eustachian tube, and insertion is into the manubrium of malleus.
जो मेलियस बोन है उसके मैन्यूब्रियम में इट इज इंसर्टेड. एक्शन, व्हाट इज इट्स एक्शन? इट कीप्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड कॉन्स्टेंटली. अगर लूज हो जाएगी तो साउंड वेव से वो वाइब्रेट नहीं करेगी. सो जो टेंसर टिम्पैन है, एज इट्स नेम इंडिकेट्स, वो स्ट्रेच्ड रखता है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, एंड इट इज अ स्केलेटल मसल. नाउ स्टेपिडियस. Stapedius is the smallest skeletal muscle of human body. ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन आ गई और अब ये स्मॉलेस्ट मसल आ गई. नाउ इट अराइजेस फ्रॉम इंटीरियर पिरामिड ऑफ टिम्पैनिक कैविटी. जो टिम्पैनिक कैविटी है उसके इंटीरियर पिरामिड से इट अराइजेस and inserted into the posterior surface of neck of stapes. It prevents excessive movement of stapes bone. Now a word about Eustachian tube or the auditory tube. क्या करता है ये? मिडल ईयर को, ये यहाँ से मिडल ईयर को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नोज से कनेक्ट करता है. It is passage between internal ear and atmosphere. What does it do? It helps equalizing the pressure on both sides of tympanic membrane. ये पार्ट तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, बट ये बंद पार्ट है. बट सो ये जो यूस्टाशियन ट्यूब है, दिस एक्ट्स टू कनेक्ट इट टू the external environment. So whenever we are in flights, we feel that our eyes are closed. That is due to blockage of Eustachian tube. इसलिए जब हम swallow करते हैं तो this opens up. Similarly, whenever we have upper respiratory infections, these Eustachian tube can block, and then we have a feeling of pain and blockage of ear. Internal ear or labyrinth. अब जो internal ear है हमारा, इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. पूरा सब मेम्ब्रेन से बना होता है. एनक्लोज्ड बाय बोनी लैब्रिंथ इन द पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेम्पोरल बोन, 4 डिफरेंट पार्ट्स. ये पीट्रस पार्ट में होता है. सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग क्या होता है? कोक्लिया. कोक्लिया इज सिचुएटेड इन द मिडल ईयर. एंड सेंस ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम वो कौन होता है? Vestibular apparatus. That is also present in the internal ear. Now, what is cochlea? Cochlea is a snail-shaped hearing organ. It is made up of 3 chambers. I think इस तरह से 3 chambers होते हैं इसमें. So it is made up of 3 chambers that spiral around the body core, bony core. The hair cells inside the cochlea detect the sound and send the information through the cochlear nerve. So it consists of 2 structures, the modulus and the bony spiral canal. Modulus is the central conical axis formed by spongy bone, and bony spiral canal winds around the modulus. Now into the detailed structure of cochlea. There is a basilar membrane and a vestibular membrane. It divides it into 3 compartments: the vestibular canal or scala vestibuli, the tympanic canal or the scala tympani, and the scala media. Now the scala vestibuli arises from oval window, lies above the scala media at the apex of osseous canal, and communicates with scala tympani through helicotrimma. And filled किससे होती है? What is it filled with? There is perilymph inside it. So ये oval window से start हुई,
स्केला मीडिया के ऊपर है ना। एंड ओवल विंडो पे क्या होता है, स्टेपीज का फुट प्लेट से क्लोज होता है, तो वहां से ये स्टार्ट होती है। एंड जो ऑसियस कैनाल है उसको पूरा एपेक्स तक, इट इज देयर अप टिल एपेक्स। एट एपेक्स इट कम्युनिकेट्स विद स्केला टिम्पेनाई, ये इससे कम्युनिकेट कर जाएगी यहाँ से थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड और अ स्मॉल कैनाल कॉल्ड हेलिकोट्रिम। वहां पे जाके ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं एपेक्स में थ्रू हेलिकोट्रिमा। Then next is scala tympani. Now, scala tympani lies below the scala media. It is parallel to scala vestibuli and ends at the round window. वो ओवल विंडो पे एंड हो रहा था, दिस विल एंड एट द राउंड विंडो. राउंड विंडो इज क्लोज्ड बाय strong thin membrane which is known as secondary tympanic membrane, and again this is also filled with perilymph. Now what is scala media? In between these two there is scala media or the cochlear duct. It ends blindly at the apex. This is not connected with anything. This will go and end blindly at apex. Sensory part of cochlea or the organ of Corti is situated in upper surface of the basilar membrane. ये basilar membrane है, इसके upper surface पे यहाँ पे the organ of Corti will be there. Again, I have done a spelling mistake in this. It is organ of Corti, not Cortini. Now, this is the detailed structure of organ of Corti. What does organ of Corti do? Receptor organ for hearing होता है, ठीक है? जैसे eyes में rods and cones होता है, receptors for vision, वैसे ही this is receptor organ for hearing. It is a neuroepithelial structure. It rests on the lip of spiral lamina and basilar membrane. And roof is formed by gelatinous tectoral membrane and it extends throughout cochlea except for a short distance at the either end. It extends in the entire cochlea. Now it is made up of sensory elements called hair cells and various supporting cells are arranged in order from center to periphery. So hair cells होते हैं जो कि मेनली सेंसरी एलिमेंट होता है इनका, है ये hair cells. But there are many supporting cells which have to be present over there. Now first is border cells. So from center to periphery, these cells will be named as number 1 border cell, number 2 inner hair cell, number 3 inner phalangeal cell, number 4 inner pillar cell. Now these three will again repeat in as outer, इसी order में, reverse order में. So outer pillar cell, outer phalangeal cell and outer hair cell. तो 7 layers तो ऐसे ही याद हो गई. पहला border, फिर inner hair, phalangeal pillar, HPP, then PPH, pillar phalangeal hair, पर outer हो जाएगी. Then there are cells of Hansen, cells of Claudius, and tectoral membrane or lamina reticularis. So these are the 10 layers. Now there are two types of hair cells in organ of Corti. Outer hair cells and inner hair cells. Hair cells क्या करते हैं? These are receptors for the auditory sensations. Surface जो होता है इनका features a cuticular plate and stereocilia, which are short, stiff hair, which are in contact with the tectorial membrane. Now, each hair has about 100 stereocilia.
एंड काइनोसिलम नाम क्या, नाम अगेन इज अ टर्म which stands for single larger stereocilium. Sensory nerve fibers are distributed around the hair cells, है ना, जो भी hair cells है, ये ऊपर यहाँ पे टेक्टोरल मेम्ब्रेन आ गई, and there are sensory nerve fibers distributed around them. तो ये कोक्लिया में दीज विल बी प्रेजेंट ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में, एंड यहाँ से फिर ऑडिटरी नर्व और कोक्लियर नर्व स्टार्ट होती है, which runs from cochlea to the brainstem. It transforms sound vibration to electrical impulses, and this is now sent to the brain. Now, auditory pathway. Similar to optic pathway, जो कि हमने आई में पढ़ा, एक auditory pathway होता है जो कि हमें सुनने में मदद करता है। तो रिसेप्टर्स हमने देख लिए। रिसेप्टर सबसे पहला जो first part of this pathway will be receptors. So receptors are outer and inner hair cells of the organ of Corti. देन इनसे आएंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होता है? बाइपोलर सेल्स ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन। स्पाइरल गैंग्लियन कहाँ होता है? इन मोडियोलस ऑफ कोक्लिया, कोक्लिया के अंदर ही होता है। नाउ जो इनके डेंड्राइट्स है बाइपोलर सेल्स के, द बाइपोलर सेल डेंड्राइट्स सराउंड द हेयर सेल इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, एंड जो इनके एक्सॉन है, दे विल लीव एज कोक्लियर नर्व फाइबर्स एंड एंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये दे विल, ये यहाँ पे हो गया आपका कोक्लिया। कोक्लिया में से जो ये बाइपोलर सेल्स है, इनके जो एक्सॉन्स है, दे विल लीव एज कोक्लियर नर्व फाइबर एंड दे विल एंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, fibers split into two groups. Ventral means our front part. This is our ventral surface. And piche, this is our dorsal surface. So, in medulla oblongata, fibers split into two groups, the ventral and the dorsal. So, जो ventral है वो ventral cochlear nuclei and dorsal है वो dorsal cochlear nuclei में end होंगे of same side. यहाँ तक कोई क्रॉसिंग नहीं हुई है, कोक्लियर नर्व बनी और वो आके वेंट्रल एंड डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लियाई में एंड हो गए। अब यहां से अपने आएंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियाई इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, ये हो गए हमारे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। देयर एक्सॉन्स रन इन 4 डायरेक्शंस। अब यहां तक तो साथ आगे फाइबर्स बस आगे पीछे वेंट्रल डॉर्सल में डिवाइड हुए। अब जो ये यहाँ पे न्यूरॉन्स है, इनसे जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेंगे वो क्या होते हैं? 4 डायरेक्शंस में रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है? दे क्रॉस मिड लाइन, रन टू अपोजिट साइड, ये यहां से ये रन टू अपोजिट साइड टू फॉर्म ट्रेपेजॉइड बॉडी एंड गो टू सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये यहाँ पे है ना, इधर, तो इधर का इधर होगा एंड गो टू सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड क्या होता है? दे विल टर्मिनेट एट सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ऑफ द सेम साइड, कम फ्रॉम हियर 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 एंड एंड इन सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ऑफ सेम साइड। क्रॉस हो गए, सेम साइड में आ गए। थर्ड, दे विल रन इन लेटरल लेमनिस्कस। लेटरल लेमनिस्कस होता है जिसके थ्रू पाथ्स रन करते हैं ऑफ सेम साइड एंड टर्मिनेट इन न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमनिस्कस। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमनिस्कस। कहाँ है ये? पोन्स में। तो रन इन लेटरल लेमनिस्कस ऑफ सेम साइड एंड एंड इनटू द लेटरल लेमनिस्कस, न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमनिस्कस। अगेन यहाँ पे क्या हो सकता है? दे कैन क्रॉस द मिड लाइन एज इंटरमीडिएट ट्रेपेजॉइड फाइबर्स एंड join nucleus of lateral lemniscus of
opposite side. They will now go to ये गए इधर and they will end into nucleus of lateral lemniscus of opposite side. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से नर्व बनी, यहाँ आई, नर्व आके वेंट्रल और डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई में आ गई. अब यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे दे विल follow four paths. Firstly, cross midline and go to superior olivary nucleus. Don't cross midline and go to superior olivary nucleus of same side. Then cross midline as intermediate trapezoid fibers and join nucleus of lateral lemniscus of opposite side. And similarly, don't cross midline and nucleus of lateral lemniscus of same side. ये चार तरह से पाथवे आगे बढ़ सकता है. Then we come to third order neurons. In superior olivary nucleus and nucleus of lateral lemniscus. यहाँ पे ये situated होते हैं third order neurons. Nucleus of lateral lemniscus and superior olivary nucleus. Fibers from here end in medial geniculate body. यहाँ पे mid brain में. This is cortex. इसके नीचे जो भी है that is subcortical area. So medial genicular body is a subcortical auditory center. Fibers from medial geniculate body go to temporal cortex. Auditory area जो है वो temporal cortex में होता है. So from medial geniculate body go to auditory cortex via internal capsule as auditory radiations. Now cortical auditory center is in temporal lobe and areas के number क्या है? 41 and 42. What does this do? Perception of auditory impulses. Sound को perceive करेंगे. Then there is vernix area which helps us in analysis and interpretation of sound with help of audio psychic area. So vernix area के बारे में अपने को इतना ही याद रखना है कि it is responsible for analysis and interpretation of sound. है ना? क्या साउंड आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, उसको ऑडियो साइकिक फॉर्म में इंटरप्रेट किया जाता है. तो ये हो गया मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और यहाँ से ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक आ गए. सो ये इस तरह से होता है. ये कॉर्टेक्स है, ये यहाँ से पाथवेज जा रहे हैं एंड ये मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला. नाउ इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या होगी? सो व्हेनेवर देयर विल बी अ लीजन इन कॉक्लियर नर्व हियर, so there will be complete blindness or complete deafness of that side. Then unilateral lesion of auditory pathway above cortical nuclei, above cochlear nuclei. So अगर cochlear nuclei के ऊपर है ना, ये आपके हो गए cochlear nucleus, इसके ऊपर अगर कहीं भी डैमेज होता है तो क्योंकि फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ फाइबर्स कहीं पे काम कर रहे होंगे. That's why there will be diminished hearing. Then there can be degeneration of hair cells of organ of Corti. उसमें क्या होगा? There is gradual loss of hearing as in old age. Then superior olivary nucleus. In that there will be poor localization of sound. So this is the applied physiology. So this completes the structure of ear and auditory pathways. It is important and there are questions from this. So just go through it. Auditory pathway is not that tough. कुछ keywords है. If you will remember them, then you will be able to do it very easily. Thank you.